Okay, hello class 10th. Now today in this class we are going to start with the same chapter and one numerical I have selected for you. It is from the calorimetry and we have to discuss about the consequences which are based on the high specific latent heat of fusion of ice. So we have to discuss all these things. So before going further, let me remind you what we have done in the last class. In the last class we have discussed about these two formula for finding out the heat. The first one is Q equals to mc del T and second one is Q equals to ml. तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इन द लास्ट क्लास. Q equals to ml हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? We have to use this formula where the state is changing. जहाँ पे state change हो रही है वहाँ पे आप इसको Q equals to ml यूज करोगे, and if the state is not changing then we have to use Q equals to mc del T. C is what? C is the specific heat capacity and this L is the specific latent heat capacity. Okay, so let us start with the numerical. In the numerical it is question number 10 from your book itself. Question number 10, not question number 10, it is example number 10 on page number, I think page number is 278. It is 278 page, example number 10. So let me read the question first of all for you all. In this question he is saying you a cube of ice of mass 10 grams. You are having a cube of ice of mass 10 grams at 0 degree Celsius. Temperature कितना है इसका? 0 degree Celsius है. Latent heat specific capacity कितनी है? It is 80 calorie per gram. Is added to water. Water का मास कितना है? 200 grams है. टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम. सो देखो यहां पर क्या होगा, जो आइस है आइस विल मेल्ट. आइस मेल्ट करके किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में कन्वर्ट होगी. ओके, वाटर में कन्वर्ट होगी. आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री है. तो वाटर सबसे पहले कन्वर्ट हो रही है 0 डिग्री वाटर में. फिर 0 डिग्री वाटर क्या करेगा? T डिग्री वाटर में जाएगा. ओके, 0 डिग्री वाटर जो है T डिग्री वाटर में जाएगा. सो यहाँ पे आइस चेंज हो रही है किसमें? वाटर में. द स्टेट इज चेंजिंग. द स्टेट इज चेंजिंग मीन्स के यहाँ पे Q1 से इक्वल्स टू ml यूज करेंगे आप दिस फॉर्मूला बिकॉज द स्टेट इज चेंजिंग. तो देन इन दैट केस वी हैव टू यूज Q इक्वल्स टू ml. यहाँ पे स्टेट नहीं चेंज हो रही है तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? से इट इज Q2 इक्वल्स टू mc del T. हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा कौन? आइस. या हीट गेन करेगी आइस और हीट लॉस कौन करेगा? वाटर लॉस करेगा. तो सबसे पहले निकालते हैं हीट गेन. हीट गेन बाय आइस. सो हीट गेन बाय आइस से इट इज इक्वल्स टू Q डैश. इट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. So what is the value of Q1? Q1 की वैल्यू कितनी है? It is ml. So मैंने ml लिख दिया. And what is the value of Q2? It is mc del T or simply you can write T also. So इनकी values डाल दो. ml is how much? It is 30 grams. L is how much? It is 80. So write 80 here. And plus Q2 30. What is the value of C? C is 1. Into and what is the value of this del T? Del T कितना होगा? Del T will be how much? आइस जो है what is the value of this del T? आइस क्या करेगी? आइस 0 डिग्री से T डिग्री पे जा रही है. So that means del T will be T only we can say. 0 डिग्री से T यानी कि T minus 0. तो it gives me this much. So from here इसको सॉल्व किया तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 2400 प्लस हाउ मच? इट विल बी 30T. लीव इट लाइक दिस. अब निकालते हैं हीट लॉस. हीट लॉस कौन करेगा? द हीट लॉस इज बाय वाटर. वाटर हीट को लॉस करेगा. सो हीट लॉस निकाला तो हीट लॉस विल बी हाउ मच? Q इक्वल्स टू mct. mc del T we can say. m is how much? It is 300. And what is the value of C? The C is given to us 1. And what is the value of this del T? Water का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री है. 30 डिग्री से T डिग्री पे जाएगा. तो that means 30 minus T
is the value of del T. So heat gain equals to heat loss. Principle of calorimetry लगा दो. Heat gain equals to heat loss. So heat gain कितना हुआ है? So it will be 2400 plus 30T equals to heat loss कितना हुआ है उसको? The heat loss will be 300 into 30 minus T. So this is the heat loss. Okay, ये heat loss है. Now अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए what to do now? तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे, so 1 2 3 कट गए. So we are left with 240 plus 3T equals to, from here 30 बच रहा है. We are left with 30. 300 is the, nahi, it is 200. So we have by mistake we have taken 300. It is not, the mass is not 200 300, it is 200. Okay, so sorry for that. So now multiply kiya, it gives me 600 plus 20T. Now from here isko shift kiya idhar, it will become minus 20 not plus 20. 20 को शिफ्ट किया इधर, so it become 23T and उसको शिफ्ट किया इधर, तो 600 माइनस कितना 240, तो माइनस किया तो हाउ मच वी आर गेटिंग, माइनस करके 360 वी आर गेटिंग. सो T इक्वल्स टू 360 अपॉन 23, काटेंगे इसको, सो वी गेट 15.85 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द temperature. This is the final temperature of the mixture. That means when we mix water with the ice, the final temperature will become this much. Now after this, let us discuss the few consequences based on the high latent heat of ice. So the consequences are, the first one, there are many consequences, but it is not possible for us to discuss all of them, but few of them we are discussing. The snow on the mountain does not melt at once. Snow on the mountains does not melt at once. So the reason is very simple. Since the latent heat of fusion of ice is very high, so it's required a lot of heat for melting, and from the sun it is the heat which the ice is getting is slowly धीरे धीरे करके इसको हीट मिल रही है from the atmosphere we can say, or from the sun we can say. So धीरे धीरे slowly it keeps on melting. The second one, in cold countries water in the lakes and ponds does not freeze all at once. तो water in cold countries, जो बहुत cold countries हैं वहां पे water in the ponds does not froze at once, एकदम से freeze नहीं हो जाएगा. Again the reason is same. So for freezing of ice, water को क्या करना पड़ेगा, it have to lose lot of heat. So for losing so which is not possible, एकदम से possible नहीं है. Okay, इतनी heat lose करना possible नहीं है, तो वो क्या करता है, slowly अपनी heat को lose करता है और slowly it get converted into ice. Then we have drinks get cooled more quickly by adding a piece of ice than a ice cold water. Again the reason is same. So drinks में अगर आप water डालेंगे 0 डिग्री पे, तो water तो already liquid state में है, but ice डालेंगे तो ice क्या करेगी, first of all it absorb the heat to change itself into the liquid form. Liquid form में convert होने के लिए वो क्या करेगी, अपने heat को absorb करेगी from the drinks, उससे absorb करेगी, liquid में change होगी, 0 डिग्री पे आएगी, फिर और heat absorb करेगी, फिर temperature को rise करेगी. So we can say, since the latent heat of fusion of ice is high as compared to the specific heat capacity of water, so therefore the ice cubes, when you put ice cubes in the drinks, it get cool more fast. So these are the few consequences. It is given in the book itself. एक बार उनको read कर लेना. Okay, it is very important to read them because वहाँ से कोई ना कोई एक आध consequences आ जाएगा.
इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल्स है, और न्यूमेरिकल्स है एक हम लोगों ने डिस्कस किया, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वी हैव टू डिस्कस देम वन बाय वन बिकॉज द न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस चैप्टर आर हार्ड, वो ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, वी आर कीप ऑन डिस्कसिंग वन बाय वन। कल कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ट्राई योरसेल्फ आल्सो, गिव मी योर, सेंड मी योर प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।